Good morning, children. I am Intisar Ahmed, economics teacher. Today I am going to teach you the topic stock and flow. Okay, so we will see the difference between stock and flow, because later on in the calculation of national income we have to separate the flows from stock. So first of all, I will tell you the meaning of stock. Stock refers to that quantity which can be measured at any point of time. It can be measured at any point of time. That means it does not require any time period or time dimension. Like for example, if you say what is the total population of the country, you know the total population of the country you are able to know by the census method. Okay, this census is done earlier in 2011. Now it is going to be done by 2021. So up to that period you will be able to know the total population of the country irrespective of who has taken birth when and who died when. Since independence, it is before that, it hardly makes any difference. We have head count of the people and we will say this is the total population of the country. So it is a stock. That means we can calculate at any point of time. Like one simple example I will give you. Suppose कितना पैसा है आपकी पॉकेट में, आप उसे निकाल के काउंट कर सकते हो और बता सकते हो कि कितना है. दैट इज़ अ स्टॉक. इससे फ़र्क नहीं पड़ता आप घर से कितना पैसा लेकर चले थे, कितना आपने खर्च कर दिया, आपके पास इस समय कितना पैसा पॉकेट में है. दैट इज़ योर स्टॉक. वन मोर एग्जाम्पल आई विल टेल यू हाउ मच इज़ द टोटल मनी सप्लाई ऑफ द इकोनॉमी. हमारी इकोनॉमी में कितना मनी सर्कुलेशन में है, ये स्टॉक है. कैसे? आरबीआई ने जो भी लास्ट करेंसी नोट छापा होगा उसके पास रिकॉर्ड आ गया होगा कि अब तक कितनी करेंसी प्रिंट हुई है इंडिया में. इट मीन्स दिस मच इज़ मनी इन द सर्कुलेशन. सो दैट इज़ अ स्टॉक. इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि पहला नोट कब छपा था, कितने नोट डिस्कार्ड कर दिए गए, कितने नए नोट ऐड हो गए. दैट मीन्स द फाइनल एंट्री ऑफ द आरबीआई विल टेल यू द टोटल क्वांटिटी ऑफ द मनी, टोटल वॉल्यूम ऑफ द मनी इन द इकोनॉमी. Hence it is a stock concept. I will give you few more example, but before completing topic flow. Now flow is a quantity that is measured over a period of time. It is measured over a period of time. It means it require a time dimension, like for a period of 1 year or a decade or a century, maybe few hours, few week. Okay. Like for example, if I ask you what is the income of your family, what is the income of your parent, so suddenly you will ask me कि सर ये बताइए आप जो इनकम पूछ रहे हैं फैमिली की, वो पर डे की पूछ रहे हैं, पर मंथ की पूछ रहे हैं या पर एनम पूछ रहे हैं. अदरवाइज माई क्वेश्चन इज अनकम्प्लीट. सपोज आई वॉन्ट टू नो योर एनुअल इनकम ऑफ द पेरेंट and you are telling me per month income, so the answer would be wrong. It means the correct figure of income I will get if I will tell you the time period कि कितने दिन की इनकम बतानी है आपको. Similarly, suppose I say कि how much money is there in your bank account or in your parents bank account and what amount of interest is paid by the bank on that. So you know interest paid by the bank will be on time basis. वेदर आपने एक पैसा को एक महीने के लिए रखा था बैंक में, एक साल रखा था, तो टाइम के अकॉर्डिंग वो आपको इंटरेस्ट पे करेगा. दैट मीन्स इट हैज़ टाइम डायमेंशन, वेयर एज स्टॉक हैज़ नो टाइम डायमेंशन. सो इट मीन्स विदाउट आइडेंटिफाइंग द टाइम पीरियड we will not be able to give the correct answer. Like I am giving you one more example. Suppose savings. Savings is a flow concept again. Why? Because some of you may have doubt that saving is a stock concept. No, that is called wealth. Wealth is a stock concept, that how much property you have, how much jewelry you have at your home. But savings again will be time based. You know, saving and consumption are the part of income. So when income is flow, saving and consumption will also be flow. They are time based. कि मान लो मैं आपसे पूछूं कि आपकी सेविंग कितनी है, तो आप तुरंत कहोगे सर क्या बचपन से जो अब तक मैंने सेव किया अपनी गुल्लक में, या अभी एक महीने में कितना सेव किया. सो इट मीन्स सेविंग अगेन इज अ फ्लो. सेम वे एक्सपेंडिचर और द कंजम्पशन इज ऑल्सो अ फ्लो. सपोज आई आस्क यू हाउ मच इज योर एक्सपेंडिचर,
तो आप यही कहोगे सर आप एक दिन का एक्सपेंडिचर पूछ रहे हैं मुझसे या एक महीने का पूछ रहे हैं. So all these are flow which require time period, which require time dimension. I am giving you few more examples of beyond the economics. Beyond the economics क्योंकि बहुत सारे बच्चों को वो एग्जाम्पल समझ नहीं आती. So beyond the example of economics I am giving you water in a tank. जैसे आपके घर में पानी की टंकी है, जब आप समरसेबल चलाते हैं पानी भर जाता है तो आपको मालूम है कि उसमें कितना पानी का लेवल है. You can say it is 500 liter or 1000 liter. So that is a stock. It can be measured. But if suppose there is a leakage in that tank, उसमें से पानी बह रहा है, भरते हैं बह जाता है, निकल जाता है, तो इट्स अ फ्लो. टाइम कुछ फिक्स नहीं है. जब तक उसको आप स्टोर ना करें आप बता नहीं पाएंगे कितना उसमें से लीक हो गया, कितना उसमें भरा जा रहा है. सेम वे यू कैन से वाटर फ्लोइंग इन अ रिवर, इट्स अ फ्लो. बिकॉज वी कैन नॉट मेजर हाउ वट इज़ द लेवल. इसीलिए आप देखिए डैम बनाए जाते हैं और डैम पर पानी को रोका जाता है, तब जाकर लेवल पता लगता है कि कितना है उसका. सो फ्लोइंग वाटर इज़ अ फ्लो. So I think it's clear now the difference between stock and flow. Now after separating them, what we have to do, when coming topics we will discuss, in that you have to identify all the flows and they are to be used in the calculation. Thank you.